ओके अस्सलाम वालेकुम। सो टुडे टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज़ साइकोलिंग्विस्टिक्स। लिंग्विस्टिक के जो हैं मैंने कहा था कि वो 20 अबव क्वेश्चन हम करेंगे इंशाल्लाह। तो वो अभी मेरा ख्याल है 20 से अबव होने वाले हैं। आज का क्वेश्चन जो है वो सेकंड लास्ट होगा। कल इंशाल्लाह लास्ट क्वेश्चन जो है सोशल लिंग्विस्टिक, उस पर मैं डिटेल में बात करेंगे। आज है सोशल लिंग्विस्टिक, आज है साइकोलिंग्विस्टिक। साइकोलिंग्विस्टिक और साइकोलॉजी ऑफ लैंग्वेज इज़ द स्टडी ऑफ the psychological and neurobiological factor that enable humans to acquire, use, comprehend and produce language. Psycholinguistics is the discipline that investigates and describes the psychological processes that make it possible for humans to master and use language. Psycholinguistics conduct research on speech development and language development and how individuals of all ages comprehend and produce language. Psycholinguistics is concerned with the nature of the process that the brain undergoes in order to comprehend and produce language. लैंग्वेज को प्रोड्यूस करने में जो प्रोसेस यूज़ हो रहा है साइकोलिंग्विस्टिक उसकी स्टडी है। फॉर एग्ज़ाम्पल द कोहोर्ट model seeks to describe how words are retrieved from the language lexicon when an individual hears and sees linguistic inputs. नेक्स्ट लिंग्विस्टिक के कुछ इसके साइकोलिंग्विस्टिक के पीरियड्स ऑफ साइकोलिंग्विस्टिक। द डेवलपमेंट स्टेप ऑफ मॉडर्न साइकोलिंग्विस्टिक्स एंड आर क्लासिफाइड इनटू 4 मेजर periods that are formative period, linguistic period, cognitive science period. Next जो headline है वो है 4 roots of psycholinguistic. These 4 perspective of psycholinguistic continue into the 20th century but in quite divergent framework. There are German consciousness and thought psychology, Swiss or French and Prague Venus structuralism, Russian and American behaviorism, and almost aggressive holism in aphaesiology. ये जो हेडलाइंस हैं ये शॉर्ट क्वेश्चंस में भी आ सकते हैं क्वेश्चन। 4 रूट्स ऑफ साइकोलिंग्विस्टिक ये हो गया, जैसे पीरियड्स ऑफ साइकोलिंग्विस्टिक हो गया। इस तरह के जो क्वेश्चन हैं ये शॉर्ट क्वेश्चंस में भी आ सकते हैं। फादर ऑफ साइकोलिंग्विस्टिक। सम सेज दैट द फादर ऑफ साइकोलिंग्विस्टिक इज़ जेकब कैंटोर। द साइंस ऑफ साइकोलिंग्विस्टिक began in 1936. When Jacob Cantor, a prominent psycholinguist at the time, used the term psycholinguistics as a description within his book An Objective Psychology of Grammar. Next, branches of psycholinguistics, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है। Psycholinguistics covers 3 main aspects: language comprehension, language production and language acquisition. Psycholinguistics or psychology of language is the study of the interrelation between linguistic factor and psychological aspects. The discipline is mainly concerned with the mechanism by which language is processed and represented in the mind and brain, that is the psychological and neurological factor that enable humans to acquire, use, comprehend and produce language. बात ही सारी ये है कि लैंग्वेज जो है उसको कैसे यूज़ किया जाए, कैसे एक्वायर किया जाए, कैसे प्रोड्यूस किया जाए और कैसे comprehend किया जाए। Psycholinguistics is concerned with the cognitive faculties and processes that are necessary to produce the grammatical structures of language. It is also concerned with the perception of these constructions by a listener
Initial forays into psycholinguistics were in the philosophical and educational fields due to mainly to their location in departments other than applied science. For example, cohesive data on how the human brain function. Modern research make use of biology, neuroscience, cognitive science, linguistics, and information science to study how the mind-brain processes language, and less so the known processes of social science, human development, communicational theory, and infant development, among other. There are several sub-disciplines with non-invasive techniques for studying the neurological working of the brain. For example, neurolinguist has become a field in its own right, and developmental psycholinguistics concerned itself with a child's ability to learn language. इम्पॉर्टेंट MCQs ये आ सकता है कि साइकोलिंग्विस्ट डेवलपमेंटल साइकोलिंग्विस्ट जो है वो अपने आप को कंसर्न करती है चाइल्ड्स एबिलिटी टू लर्न लैंग्वेज, कि लैंग्वेज एक बच्चा कैसे सीखता है, उसका पूरा प्रोसेस जो है उसके बारे में ये पूरे क्वेश्चन में बात वही की है कि लैंग्वेज को कैसे एक्वायर करना है, कैसे उसको यूज़ करना है, प्रोड्यूस लैंग्वेज कैसे करनी है और कम्प्रीहेंड कैसे करनी है। ये सारा जो प्रोसेस है ये उसको साइकोलिंग्विस्टिक्स कहते हैं। ओके, साइकोलिंग्विस्टिक का क्वेश्चन ख़त्म। पूरा जो टॉपिक है उसका डेफिनेशन जो है वो याद रखनी है। कुछ 3-4 क्वेश्चन है इसमें, शॉर्ट क्वेश्चन जो आ सकते हैं वो याद रखने हैं। बस इतना ही था क्वेश्चन। अल्लाह हाफिज़, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। अल्लाह हाफिज़।